The theme is building brands. So the format that we will use is that I'll continue asking a few questions to our panelists and we'll open up for everyone. So tell us a little more about your background, what have you studied, when did you start a business, whether you were good in your job or not, that's why you started a business. So we'll start with Kena. What's your background, education background, how did you get started? Basically, when I was coming here, it felt like I was reliving my dream because I am also an MBA student. I was an MBA student and I started my journey, in 2017. MBA is very special to me because that was the time when I realized that I wanted to start my own brand, which is now Vinara. So that's how my journey started. So, hardcore advertising person. I started my career as a sound engineer and then gradually upgraded to editing, graphics, VFX. Digital came into light after 2007. We worked for all sort of big brands like Pizza Hut, KFC, Taco Bell, Reliance, Reliance, Airtel, Max Life Insurance. A lot of campaigns we did for them across the India. I was in Gurgaon at that time. I came to Ahmedabad after 2016 and started Brandstrategy, an initiative that helps the MSME sector of India, which is they don't have the budget to branding. They are very frugal in terms of their marketing budgets. No understanding of how to brand, how to create a brand. So we take this initiative to help them. People can at least identify their inner potential of at least a brand name and then get their initial wow. So that's how we started this Brandstrategy. So hi everyone, I am founder of Hungrito and NetSeries. Hungrito is a food discovery platform, mostly known for doing food-centric events, large-scale festivals that we do across 6 cities in Gujarat right now. And there's another company which I lead, which is called NetSeries. It's a digital marketing consultancy firm where we help Series A, Series B funded companies to scale up well. And that is what we have been doing. Again, not done MBA. So, but I teach at MBA colleges. I teach MBA second year a lot for 1 semester at least in a year. So I teach at EDI right now as a visiting faculty, and that's what I have been doing. What's your education? So I am a DICT pass out. I am a ICT engineer, 2010 to 2014 background. I can sit here with you and nobody will recognize. I'm my first year sunny. So that is on my side. So मेरे हर जगह यही होता है कि भाई कौन से साल से हो, कितने साल के हो. So I am 32 officially. बस आपको ऐसा लगे कि हाँ पैनल में बच्चा कौन बैठा है. वो बच्चा 32 साल का है. So yes, I did MBA way back in 96-98 from IMS Indore, Devi Ali University. So my business is 20 years old now. So I'm not talking about my age. I would talk about my business age, which is 20 years old. I started Hearty Mart in the year 2004. It was a store in Johapura. Then we created a business model where we went to rural part of Gujarat and started franchisee-based Hearty Mart stores. So it's a chain of 14 stores as of now. Yes, and when I was struggling, I also taught MBA students. I taught for 6 years. I taught advertising, marketing, and retail. Because that gave me my earning when my business was not giving me my earning. Yeah, thank you. I would have engineering. जैसे मैं pass out होते हैं, I was a barely pass out. मेरा engineering typically 4 साल का होता है, मेरा engineering 6 साल का हुआ था. तो वो project वाले time पे I got detained because of lack of attendance. So I'm not necessarily a great person to come and speak in college. क्योंकि I was one of the offenders of जो ideal colleges में होना चाहिए वो सब नहीं करता था. Means cricket करता था जो college में था. But I started working 4 साल मैंने job करी. In 2009 we started. What does your brand stand for? Like what is the message that you are trying to convey with your brand? Okay, so my brand's name is Inara, and basically I am a fashion designer and a visionary behind the brand Inara. So our concept is that we design clothes that suits today's modern women. We are also trying to build a brand that is that gives styling and comfort at the same time. So it's not monochromatic. The brand that we are creating is like one of the common products. It's just that we are adding spice, to your ordinary days. So yeah, that's what Inara stands for. Do you have a tagline? What is the tagline? So we don't have a tagline, it's just that we want people to wear something that not everyone is wearing, but at the same time feel very comfortable
in whatever style or silhouette they are wearing. What does brandstrategy stand for? What is the message? What is the tagline? So the idea was कि branding हमेशा से मतलब early age से it is a privilege की तरीके से देखा जा रहा है कि जिनके पास पैसा है, expertise है, वही लोग branding कर सकते हैं in terms of big campaigns, big star को लेना और एक campaign roll out करना and उस पर paid promotion करके उसको visibility में लाना. So that's where we take this initiative कि हमें इसको challenge करना है. हम ब्रांडिंग को इंडिया में डेमोक्रेटाइज कैसे कर सकते हैं. इट शुड बी लाइक अगर जीएसटी आपको नंबर लेना पड़ता है एक बिजनेस करने के लिए, इट इज अ मैंडेटरी. सेम वे एक अच्छा लोगो, अच्छा डिजाइन, बेसिक हाइजीन इन टर्म्स ऑफ दैट ब्रांडिंग में लेटर है, उनके वेबसाइट एक अच्छा होना चाहिए, ये हर बिजनेस का एक राइट होना चाहिए. सो दैट वाज वी फेल्ट एट दैट टाइम कि हमें इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं. We thought कि हम इंडिया के जो लाखों बिजनेसमैन हैं, टू बी प्रिसाइज 7.9 करोड़ एमएसएमई हैं जो रजिस्टर्ड है, अभी अनरजिस्टर्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को एटलीस्ट हम बेसिक हाइजीन कैसे प्रोवाइड करें ताकि वो भी जब अपना एक व्हाट्सएप किसी को भेजते हैं आज की डेट में तो वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ जाए और उनकी लैंग्वेज में. कितने लोग आपका ऐप यूज करते हैं? सो हमारी ऐप अभी 8.4 मिलियन डाउनलोड है अक्रॉस द इंडिया. Tagline or what is it? हम बोलते हैं कि बहुत आसान है ब्रांडिंग, ब्रांडस्ट्रेटजी आसान है. सो बिकॉज हम चाहते हैं कि उनको ये ना लगे कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत टास्क है, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट जाएगा, पैसा जाएगा, टाइम जाएगा. Site, what does your brand stand? Yes, there are two companies again which I said. Hungrito is very simple. मजा आना चाहिए. So गुजराती हम लोग यहाँ से हैं तो हमारा इंटरनल टीम का मजा आएगी, ठीक है. जो जिसमें मजा आ रहा है वही करने का, ठीक है. तो हमारा वो कंपनी तो पूरा वो उस पे ही चलता है कि भाई when we do festivals, we do anything. If we feel right, we might feel that okay, this is the kind of thing that we want to do. So that is the brand which runs around that part, and that is why a lot of people resonate with what we are doing. We roughly get around 10,000 footfall on a daily basis in the festival, and the core is कि भाई जो भी आ रहा है उसको कहीं ना कोई एलिमेंट में मजा आना चाहिए. So that is one. Other is net sales, which has a tagline of fostering creativity. It is more about where majorly when we were in college, again I come from an engineering background, and like Jatin bhai said, I am also a non-engineer in that zone. I am a 5.5 pointer. So तब वही था कि भाई हम लोग थोड़े से अलग थे कि भाई इंजीनियरिंग में खा तो गए पढ़ाई लिखाई करके, लेकिन इंजीनियरिंग में मजा नहीं आ रहा तो अपन कुछ और करते हैं. So it was more focused on creativity. All the people who were around were into creative things. So that is why the tagline was net sales, fostering creativity at that time, and I think it is still running in the same way. So I started Hartimart with a retail store. So retail store ka positioning, because I entered an area which was very remote area, and then slowly we started scaling up in villages. तो हमारा tagline था सबसे खास घर के पास. We are trying to say that we are bringing convenience. That is a called brand positioning. लेकिन we are not only in retail now. We are into many things, right? So there is a corporate tagline. This is a retail tagline. Corporate tagline में हम लोग we try to create entrepreneurs wherever we go. So there are Hartimart is a group of 9 companies where micro entrepreneurs have been created. So there is Hartimart Baker's Point. Then there is Hartimart supermarket. There is Hartimart packaging. So सब Hartimart के नाम से. So our corporate tagline is faith, hope, development. When we try to create an entrepreneur, so that is the corporate tagline. From concept to finished good. So when it comes to fashion, so how I operate is, for me it is very important to work on concept first. First of all, storytelling is very important. For any product, if you want to start a brand, storytelling plays a very important role. Okay, so storytelling, पहले decide के what storytelling on what basis you want to, like how do you want to convey your message to the audience. After storytelling, then you work on the concept, like side by side, and after that you create a mood board. So mood board के हिसाब से you will start figuring out कि what are the color schemes that you want to go, what is like the silhouette that people are preferring. So on that basis, then you start the actual production process. Before the sketching and everything is done, and after that you start designing, and then the
pre-production and post-production starts. डिस्पाइट ऑफ हंग्रीडो आपने कौन से अदर बिजनेसेस में हाथ पैर मारे? हंग्रीडो के पहले So already हाँ सो उससे पहले यानी कच्चे पक्के ना 12 बच्चे थे मेरे कॉलेज ऐसे ठीक है. सो 2012 वी स्टार्टेड विद बिल्डिंग शादी.com नहीं जस्ट डायल फॉर शादी वैसा. सो आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम देयर. देन आई हैव बिल्ट अ सीआरएम आल्सो. लेकिन पेपर पे तो ओरेकल लेवल का सीआरएम बना दिया. फिर हमारी कोडिंग स्किल जैसी थी वो समझ में आया कि हम तो घर का भी सीआरएम नहीं बना पाएंगे. ठीक है. सो फिर हमने वो पेपर पे रखा. डिजाइनिंग बहुत अच्छा करते थे. फ्लो चार्ट हमारा बहुत अच्छा था. बिजनेस समझने का नॉलेज था तो वो चीज हो गई. फिर वी स्टार्टेड बाय बिल्डिंग कंटेंट. माय फोर्टे वाज इनटू बिल्डिंग कंटेंट. सो हमने उस पे ट्राई करा. सो वी वेयर एट अ टाइम नोन एज टीवीएफ ऑफ द वेस्ट. वैसा वाला जोन था हमारा. आई मेट अर्नव एंड तन्मय भट्ट एंड दोस काइंड ऑफ पीपल इन 2014 टाइम. सो तब वो जॉनर था हमारा कि हम लोग वो कर रहे थे. फिर कभी किसी ने आके कह दिया कि इंजीनियर होके ये क्या वीडियोस बनाते रहते. ठीक है. तो तब हमको ऐसा था कि डीआईसीटी पास आउट है. दूसरा ये कि जो परसेप्शन है ना कि भाई धंधे से ही होगा. I think that perception is going to already broken in our circuit a lot more, but it is going to be broken very easily in coming days. Understand one thing: the salary pay 10 years back or 15 years back was very low, but now a lot of people are earning 30 lakh, 40 lakh, 50 lakh per annum. A lot of my friends in India are earning above 1.5 crore, 2 crore of that kind of per annum pay scale. That is not always possible with businesses also. It is a lucky draw process over a period of time. So अगर आप सिस्टमेटिक वे में चलोगे ना तो नौकरी से भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है. अगेन आई कम फ्रॉम डीआईसीटी सो दैट माइट बी अ थिंग कि भाई डीआईसीटी में एवरेज पैकेज ही 10 लाख से ऊपर जाता है. बट इफ यू आर डूइंग वेल, इफ यू वर्क वेल, यू कैन ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ आउटपुट फ्रॉम बिजनेसेस ऑल्सो. अपना प्रॉब्लम ये है कि भाई अपने को ये नहीं सिखाया जाता कि भाई पैसों के बिना बिजनेस कैसे. तुमको जो समझ आता है वो धंधा समझ आता है कि भाई 40 लाख इन्वेस्ट करे, दर महीने 3 लाख रुपया बचे कि दर महीने 3 लाख आवे. ये 3 वर्ष से पैसा डबल था. हाँ सॉरी हिंदी में सो समझ में आता है. हाँ और 3 साल में पैसा डबल हुआ है. भाई आज तू क्या लेकर आया? वो बिजनेस जो तुम समझ रहे हो वो बिजनेस है कि आपने कुछ इन्वेस्ट करा, यू केप्ट ए इनटू समथिंग एंड देन यू आर गेटिंग एन आउटपुट. दैट इज द नॉर्मल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. When you are doing startups or when you are doing other form of business, then that is when you will outgrow things. But right now because the perception of business and startup is common, तो वहाँ वो डिबेट कभी जतिन भाई अलग से रखेंगे तब करेंगे. लेकिन ये है. So I did a lot of experiments before that. I continuously do experiments. हर साल हम लोग हंग्रीटो में भी कुछ करते हैं. अभी भी थोड़े टाइम में आपको दिखेगा कि अब ऐसा करिए. ठीक है. So every year we renovate or innovate. जो भी आपको टर्म अच्छा लगे. हम इंटरनली तो रिनोवेट ही बोलते हैं अपने आप को. We renovate ourselves every year. Hard life basically focus on building brand, let's say designing part and creation part. So it's a helping tool for graphic designer also that builds brands. But don't you think that it can be a threat for their business also? नहीं बिल्कुल नहीं. This is very bad actually. नहीं, this is threat किस हिसाब से? Because सर अगर कोई स्मॉल जो है जो ब्रांड बनाना चाहता है स्टार्टिंग स्टेज पे, अगर उसको थोड़ा लिटिल बिट भी नॉलेज जो है ब्रांडिंग का वगैरह, तो मतलब वो आपकी वेबसाइट पे जाके खुद भी लोगो डिजाइन या लोगो कुछ भी कर सकता है. सो वो उतना पैसा ग्राफिक डिजाइनर को क्यों देगा कि तू मेरा लोगो बना दे या फिर ब्रांड और डिजाइनिंग कर दे. So I'll give you the real case study. एक महसाणा में इधर से 45 किलोमीटर दूर पे एक ग्राफिक्स डिजाइनर स्टूडियो है छोटा सा. They mostly do the visiting card printing and banners वगैरह प्रिंट करते हैं और वही लोकली लोगों के डिजाइन्स बनाते हैं. उनको हमने ऑनबोर्ड किया. हमने उनको हमारा पोर्टल दिया. Earlier he used to manage like 10-15 clients. दिन में 10-15 लोगों के लोगो बनाता था, ऐसा कुछ करता था. अभी वो दिन के 500 क्लाइंट हैंडल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ brandstrategy, क्योंकि उसको डिजाइन करने में जो हेल्प चाहिए. Because what happens is Photoshop में आप जाओगे, you have a blank canvas. You have to start from scratch. Because of Canva and other tools, nowadays nobody starts from scratch. सीधा जाते हैं, कोई टेम्पलेट उठाते हैं, कोई डिजाइन रेफरेंस लेते हैं, इंस्पिरेशंस लेते हैं और शुरू करते हैं. हमने उसका एक स्टेप और आगे काम किया है कि हमने डिजाइन रेडी करके दिया है. If you want to get into, आपको रियल एस्टेट कंपनी का लोगो बनाना है, हमारे पास 10,000 लोगो पड़े हैं रियल एस्टेट के. You can choose any from, किसी में भी स्टार्ट करके आप सीधा अपना टेक्स्ट डालो, काम खत्म हो गया आपका. और टेक्स्ट भी एक बार डालना है तो 10,000 लोगों दिखेंगे.
So it empowers them to do more things. मतलब जो पहले 10 डिजाइन बनाते थे, आज के दिन में वो एजेंसी बन गया है कि अब वो सोशल मीडिया भी हैंडल कर रहा है उनका, वो उनको लोगो बना के भी दे रहा है, प्रिंटिंग भी कर रहा है उनका. So we have given them the power कि वो वहाँ पे 10 की जगह 50, 100, 500 क्लाइंट हैंडल कर सकता है. So थ्रेट तो है ही नहीं, बिकॉज आप फोटोशॉप अभी जानते हो. मतलब ये क्वेश्चन हमें आया था हमारी टीम से ही कि जब हमने ये स्विच ओवर किया कि अब हमारा सॉफ्टवेयर ही यूज करेंगे, आप फोटोशॉप यूज नहीं करेंगे इंटरनल टीम में. सो मैनी डिजाइनर्स केम कि सर हमारा फोटोशॉप का स्किल चला जाएगा तो हम कैसे करेंगे, तो हम काम नहीं कर पाएंगे इसमें. सो दैट्स वेयर दी चैलेंज. हमें लगा कि हमें उनको समझाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी चेंजिंग रैपिडली. अगर आप मतलब जो डिजाइन पहले होते थे अब वो चले जा रहे हैं. फोटोशॉप खुद एडोबे एक्सप्रेस रिलीज किया है ताकि उनको भी पता है कि उनका फोटोशॉप अब कम यूज होगा. कैनवा पहले नहीं आता था, 5 साल 10 साल पहले किसी को नहीं आता था. आज एवरीबडी नो, इंक्लूडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड बिगर कंपनीज, एवरी मैनेजमेंट एम्प्लॉय आल्सो नो कैनवा. तो डिजाइन टूल उसको भी आने लग गया है. सो अगर आप रैपिडली चेंज नहीं होंगे, आप उसको थ्रेट की तरह देखोगे, सो वो आपको नुकसान करेगा. यू हैव टू सी कि हाँ मेरे स्किल में एक और स्किल ऐड हो गया है, मुझे अब ये भी आता है. मेरा क्वेश्चन नदीम सर से, जैसे बहुत सारे सुपरमार्केट हैं यहाँ पे, तो मैं बाकी सब जैसे डीमार्ट, ओशिया, रिलायंस मार्ट वो छोड़ के मैं आपके यहाँ शॉपिंग करने क्यों आऊँ? डिफरेंशिएट पॉइंट क्या है? क्योंकि मैं वहाँ हूँ ही नहीं. So I am in a semi-urban and a rural area. So there is a chain of 14 stores where we are in a villages where not a single big supermarket is there. So that has given us a first mover advantage in that area. So Dholka, for an example, Dholka town, this is a taluka. There we have 2 big supermarkets, दोनों floor के. वहाँ पर there is not a single DMart, and there was, I think, one of their rural chain had come, but then it closed down. So we have tried tapping taluka as a center and cluster of villages. जैसे एक विलेज है जिसके आजू बाजू दूसरे क्लस्टर है, where you go and visit the village occasionally as a rural community. So we are targeting them. So their reliance is not there as of now, and neither DMart is there. जैसे आपका अहमदाबाद में भी यहाँ पे स्टोर है ना? Ahmedabad में we are in Johapura, so we have now DMart there, but now it's more than 20 years का story है. Now customers are very accustomed to come to our store. It's lots of convenience. Plus we have worked on the product range. जो हमारा merchandise product range है, which is very different from DMart and all. As far as food grocery is concerned, we have various range there. Maybe pricing में DMart would score above us, but otherwise, so we have a continuous story there, success story there. अभी जाओगे कि अभी भी impress नहीं हुए? एक बार जाके Please आइए, most welcome. So recently, after I completed my masters, I came up with the name Kenasha label, which was based on my name. But then before COVID, I used to do exhibitions and like pass out MBA करके obviously कुछ knowledge तो था नहीं कि करना था, क्योंकि मुझे fashion पसंद है, कपड़े पसंद है, so I wanted to start business, okay. So at that point of time, the first name came was like Manish Malhotra is there, Sabyasachi is there, सबने उनके हिसाब मतलब name पे ही नाम रखा है. तो मैंने भी सोचा कि मैं Kenasha label, my name is also unique, so I thought I'll go with that. But then what happened, COVID hit, and then I was also, not very satisfied with the brand that I was building. During COVID time, what happened is I was just sitting and with my dad, and I was like, Dad, once the COVID is done, I want to rebrand it. So Dad is like, okay, do whatever you want to do, because I know that, you'll come up with something good. Because I know myself, I know my clients, and I know what I want to give, like to the public. So I was just sitting, and it's a very funny story. I was just sitting, and one of my cousin delivered a baby girl. So I was like, they were searching for names and everything. So I was just sitting, the Rashi was H. And then I was like, H is this, that, I was deciding. And then suddenly, I don't know, I don't have a friend. I have never heard about this name, Inara. And just it's like suddenly one fine evening, I and my dad were having, tea, and we were talking, and I just said, Dad, Inara. So Dad is like shocked with, what Inara? Like, what are you talking about? You are thinking Ishita's baby girl would name Inara. So I'm like, no, this is my, this is the name that I would want to give, like rebrand it to.
And so that's how this name Inara came, and it was very unique. And I wanted something like Inara. I is a very, very unique alphabet, and my products were also going to be that. So I thought like it's short and sweet. And Inara's meaning is in Arabic, it is bringing light to the darkness. So that's how I came up with this name. Why is it brandstrategy? Yes, earlier it was brand spot. When we started, we think कि हम एक जगह बनाएंगे जहाँ पे ब्रांड अपनी आके इमेज क्रिएट कर सकता है. Then gradually we tend to know okay no we are giving much more than only just a branding. We are growing businesses, and that's why we want to want a common name which is heard by everyone already, जिन्होंने कहीं ना कहीं सुना हो. So we'll pick up the direct word जो हमने choose किया कि brands को लेते हैं, and live word use किया because we want every business to go live in like 10 seconds, 5 seconds. जैसे ही वो ऐप पे आया, he can go live with the website, he can go live with the creation of content. So that's why we struggle with the domain brands.live. It was not available. We have fought a good battle. 4 lakh रुपए में पड़ा हमें, but we bought that. लीगल तरीके से? Yes, लीगल तरीके से. उन्हें किसी को दिए वो ने करवा के करा. उन्हें जबरदस्ती दे दो और उसको 4 लाख दिए. आपने ओनर को 4 लाख दिए. So Hungrito से पहले the name was Bhukkars. Okay. So both the names don't represent me as an individual anyway. ठीक है. So whenever we used to do any exhibition or those kind of things, we're pitching in startup sessions and those kind of. Everybody outside Gujarat, Bhukkar किसी को बोला ना उनको लगा गाली दे रहे. ठीक है. तो क्या कैसा नाम रखा है, गाली दे रहे हो ऐसा लग रहा है. मैं कहा नहीं हमारे वहाँ तो कहते हैं एक दूसरे को भुक्कड़, बहुत खाता है तो भुक्कड़ होता है इसलिए उन्हें भुक्कड़ नाम रखा. Other problem was the spelling. Everybody used to spell it very differently because of the name. So when we rebranded it in 2016, we had a lot of options. We had a guy called Greg at that time in Venture Studio, and he gave the formula. So he was from animation and designing background. तो उसने कहा कि जितने भी आपके सिनोनिमस, आपकी ब्रांड के सिनोनिमस जो भी चीज़ होती है वो एक तरफ लिखो, दूसरा ये एक्सरसाइज करो, ये करो. उसमें से फूड डॉक्टर और ये सब चीज़ें आई थी. उसमें से ही हंग्रीटो एक नाम आया था. सो इट वाज बरीटो का ही हंगर और वैसा करके. इट साउंडेड वेरी नाइस और इट वाज अ गुड वर्ड. हमको सुनने में अच्छा लग रहा था, बोलने में अच्छा लग रहा था. बोलने में, सुनने में और लिखने में तीनों चीज़ में एक ही चीज़ थी और डोमेन अवेलेबल थे सब. ठीक है. सो वो था. और नेट सर्विस इज आपने ग्रेग को कुछ दिया कि थैंक यू बोला? नहीं, ग्रेग को थैंक यू ही बोला था. ग्रेग ने हमको सिखाया कि ये ऐसे करते हैं. ठीक है. बाकी ग्रेग के साथ काम बहुत करा हमने अलग अलग, यानी मदद भी बस financially. So at that time we were internet savvies, people who know internet and are building products for internet. So that is why net service was the name at that time. So brand name selection में normally क्या होता है कि जो मैंने जो पढ़ा था, मेरा जो experience था, either it should be emotional or it should be benefit driven. So and brand name plus brand positioning normally go hand in hand. So brand positioning में हम लोगों ने सबसे खास घर के पास करके we created a benefit driven, a value this thing. So now we wanted to have an emotional name because we were entering an area 20 years back when it was not considered to be very business friendly. So something which connotes emotions. So we came up with Hearty Mart, the brand friendly supermarket, as the brand name, and सबसे खास घर के पास was the tagline. Okay, awesome.